नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट से। ऑन ट्यूसडे द थ्री मेजर यूएस इंडाइसेस ट्रेडेड साइडवेज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन बिफोर गेनिंग मोमेंटम टुवर्ड्स द क्लोज. The S&P 500 hit a fresh all-time high while the Dow ended flat, up 0.02%. The Nasdaq rose 0.23% and the S&P 500 gained 0.24%. The Brent oil has been consolidating in a narrow range since the last couple of trading sessions. Going ahead, the zone of $74 to $73.8 will act as an immediate support. While on the upside, the zone of $76.7 to $77 will act as a crucial hurdle for the index. The US dollar index has been oscillating near its 100-day EMA level from the last three trading sessions. Going ahead, the 100-day EMA zone of 106.7 to 106.5 will act as an immediate support for the index. अगर हम निफ्टी की व्यू की बात करें, ऑन ट्यूसडे द निफ्टी ट्रेडेड विद इन अ टाइट 191 पॉइंट रेंज, इट्स नैरोएस्ट डेली रेंज सिंस February 5th. The index hit a low of 22,801.5 during the session before rebounding over 130 points. However, it ended the day flat for the second session in a row. आगे जाके 23,100 to 23,140 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल की तरह काम करेगा. अगर 23,140 लेवल के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होती है तो पुल बैक रैली 23,300 लेवल तक एक्सटेंड हो सकती है, जबकि नीचे की तरफ 22,800 to 22,770 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा. On the derivatives front, the February futures dipped by 0.23%, while the combined open interest for the current, next and far series also dipped by nearly 1%. The 23,000 strike has a significant call open interest, followed by the 23,100 strike. On the put side, the 22,900 has a substantial open interest, followed by the 22,800 strike. For the weekly series, OI-PCR is at 0.77, while for the February monthly series, OI-PCR is at 0.80. बैंक निफ्टी की व्यू की बात करें तो बैंक निफ्टी एंडेड द सेशन एट 49,087 लेवल विद अ लॉस ऑफ 0.35%. आगे जाके 49,500 टू 49,600 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल की तरह काम करेगा, जबकि नीचे की तरफ 48,700 टू 48,600 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा. अब हम सेंसेक्स की व्यू की बात करें, ऑन द वीकली एक्सपायरी डे द बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स विटनेस्ड अ रिकवरी फ्रॉम द लेवल्स एंड एंडेड द सेशन ऑन अ फ्लैट नोट फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन. ऑन अ डेली स्केल इट हैज फॉर्म्ड अ कैंडल विद अ लॉन्ग लोअर शैडो. आगे जाके 76,400 टू 76,500 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल की तरह काम करेगा, जबकि नीचे की तरफ 75,500 टू 75,400 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा. On the derivatives front, the weekly futures ended on a flat note and the open interest of the current series has surged by 23.21%. The 76,000 strike has a significant call open interest, followed by the 76,500 strike. On the put side, the 75,500 has a substantial open interest, followed by the 75,000 strike. For the weekly series, OI-PCR is at 0.82. Talking about the key market indicators, on Tuesday, the volatility index India VIX ended on a flat note. Currently, it is trading above its short and long-term moving averages. Going ahead, the zone of 16 to 16.2 will act as an immediate hurdle for the index. If we talk about the advanced decline ratio largely tilted in the favor of decliners. Talking about the key sectors, technically Nifty, FMCG, automobile and media space are likely to underperform the frontline indices, while Nifty Financial Services and Nifty Private Bank are likely to outperform in the short term. If we talk about the FI/DI data, the FI is bought to the tune of 4,786 crores, while DI is bought to the tune of 3,072 crore. The FI's long-short ratio for index futures is at 15.86, as on a net basis they sold 1,632 index futures. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.